and just a short while back, we were speaking with Dr. K. Shivan, the head of ISRO, and we were discussing the Prime Minister's interaction. Even as a private partnership becomes a part of space exploration in India as well. What are the possibilities? What are the potentialities? Right. What is the way ahead and what are the challenges? Joining us for more discussions on this issue, Dr. Subbarao Pavluri, CMD Anant Technologies Limited. Thank you very much, sir, for joining us. And also we have with us, We have with us Ratan Shrivastava, space expert. Thank you so much, sir, for joining us. बहुत स्वागत है सर आपका. और रतन श्रीवास्तव जी, आपके साथ ही इसकी शुरुआत करते हैं. सबसे पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी कितना बड़ा ये कदम है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी कोई नई चीज नहीं है. हमारे साथ डॉक्टर सुब्बाराव हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं. तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है. लेकिन जो नई चीज है वो ये है कि अब एक ये संगठित रूप से होगा. अब हम एक एजेंसी है इन स्पेस. पहले और अब में क्या फर्क है सर, ये भी समझाने की कोशिश करें. जी, तो अगर हम इसको देखें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, तो हम ये पाएंगे कि सबसे पहले तो जब प्राइवेट सेक्टर आया स्पेस इंडस्ट्री में, तो वो एक बहुत छोटे लेवल पे, कंपोनेंट लेवल पे आया. कंपोनेंट्स आउटसोर्स करती थी बना करके डिजाइन इसरो, और वो कंपोनेंट्स बना करके प्राइवेट सेक्टर उनको दे देते थे. ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ करीब 2-2.5 दशक पहले की बातें. उसके बाद कंपोनेंट लेवल से वो आए थोड़ा आगे बढ़े सब सिस्टम लेवल्स, और सब सिस्टम लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि बैंगलोर में इसरो है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बैंगलोर आगे है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पीजो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, ये सब बनाने उन्होंने शुरू किए. थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर रॉकेटरी में आते हैं. रॉकेटरी के सब सिस्टम्स तिरुवनंतपुरम में एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जो बनाने लग गए वहां पे. धीरे धीरे करके, जिसे हम बोलते हैं स्पेस की लैंग्वेज में असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग, AIT तक इंडस्ट्री पहुंची. लेकिन यहां तक पहुंचते हुए भी एक वेंडर ही रही, वो उनकी पार्टनर नहीं बनी. अब जो सिस्टम आया है, जो नई पॉलिसी आई है, सरकार ने की नई पॉलिसी आई है, इसके अंदर जैसे अभी डॉक्टर शिवन चेयरमैन साहब ने भी आपको बताया, इंडस्ट्री अब उनकी पार्टनर, उनकी भागीदार बन रही है. ये फर्क है. जी, right. Dr. Subbarao, coming to you. We've just heard about the various nuances, the various aspects of this private partnership. We've also learned that it's nothing new. However, we do feel that India is moving to the next level when we talk about space innovation and exploration. Dr. K. Sivan, when we were talking with him, he talked about how the IITs and NITs, they are a pool of knowledge. They are a pool of talent who will be able to enter into this new system. What do you feel? How do you react to this statement? Well, we seem to be having a connection. सर ऐसा लगता है कि आपका okay, is it fine now? Okay, right. Yeah, I'll just get into, I would like to explain a bit more about the space program before answering your question on this. Yes, since we are talking about Atmanirbhar Bharat, and in fact, as far as space is concerned, ISRO is concerned in this country, Atmanirbhar Bharat has been the milestone of that, the stone from the very beginning. When Vikram Sarabhai was the first chairman of Indian space program, the goal then was that whatever can be done in this country must be done here. What cannot be done only to be imported. That was the policy with which ISRO has been working for the last 70 years. So that way, we have Atmanirbhar Bharat in terms of delivery of the systems, in the Earth observation systems. It can be communication systems, or it can be reaching the rural people in terms of telemedicine, or it can be teleeducation, into various other sectors. Now, there's a slight change in the policy. Instead of government doing things through ISRO, that part has been liberalized. As you know, every sector in this country has been liberalized much earlier. Now, fortunately, the space sector also has been liberalized, wherein the private participation can happen fully. That means
Instead of we being, as Dr. Shivan has mentioned earlier, a company like ours and all of us earlier, we have been working with the satellite program, with the launch vehicle program, by supplying various component and systems and integration, things like that. Now we have been given the freedom of working directly for making launch vehicle, directly with the satellites related activities, which means today, like in the communication sector when liberalized in the country, the complete liberalization happened in terms of policy in the space sector also. Therefore, there is absolutely no issue about lack of expertise or lack of technical, technocrats in this country. The country has all the technocrats that's required for the programs in this country. But the only thing is from the government that has moved into the private sector, like a telecom policy. Now, if I can give you a little more examples about that, the space ISRO did wonderful job all along in terms of reaching the common man. If you look at the Earth observation systems, that we have many satellites under the Earth observation system, which has been serving to the national programs like the groundwater exploration, forest mapping, then the soil mapping. That is being the part of national natural resources systems. That's the whole foundation has been built already into that. And similarly, in the communications area, to launch a satellite to communication, a satellite to geosynchronous orbit, so we have another launch vehicle called GSLV, where PSL is being used for the Earth observation systems, putting the satellite low Earth observation system, LEOs, other one is for geosynchronous. In those two areas, already we have grown up so much. Now, as you know, India requires a lot of transponders, a lot of bandwidth. With 130 crore population, and that spreading into rural areas, we need a lot of bandwidth that's required. And also to become the part of a national natural resources development as a part of a national development, so we need every inch of land, every centimeter land is to be mapped thoroughly. So that becomes an ingredient for the national development. So in these two sectors, foundations have been laid. Now the private sector is coming forward as per the policy to become a part of the 5 trillion economy of this country. That's what Prime Minister Modi ji wants today. We are going to be the space sector going to contribute immensely into the 5 trillion economy. बिल्कुल ये सवाल भी जहां से आपने छोड़ा है कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो कही डॉक्टर सुब्बा राव ने, रतन श्रीवास्तव जी आपसे समझना चाहेंगे जो ये एक बात कही जा रही है और जो एक एस्पिरेशंस है कि अंतरिक्ष क्षेत्र का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को, पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक भी पहुंच सके, कैसे संभव होगा सर ये? तो ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसमें सबसे पहले सवाल आता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्पेस बेनिफिट्स टू द कॉमन मैन. एक्सेसिबिलिटी ऑफ द स्पेस बेनिफिट्स टू द कॉमन मैन इज ओनली पॉसिबल अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी को कम करें. और कॉस्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी तभी कम हो सकती है जब हमारा एक बेस वाइडन हो जाए. जब भी हमारा बेस वाइडन होगा तो हमारी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी. और यदि सिर्फ सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट बेस कभी वाइडन नहीं हो सकता है. अगर प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर हाथ बटाता है तब ये कॉस्ट बढ़ जाती है. और जैसे कि डॉक्टर सुब्बा राव ने अभी बोला आपको कि प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट इस देश के चप्पे चप्पे तक पहुंचना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है? अभी डॉक्टर सुब्बा राव ने 2-3 बहुत अच्छी बातें बताई. एक उन्होंने ट्रांसपॉन्डर्स के बारे में बताया, फिर उन्होंने आपको सैटेलाइट्स के बारे में बताया, कम्युनिकेशन के बारे में बताया. नाउ we have two orbits, the low Earth orbit, the geosynchronous Earth orbit, but we also have the MEO. Now MEO is the segment which is not explored in India yet, but if we have to, अगर हमें पहुंचना है देश के कोने कोने में, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो बहुत दुर्गम इलाके हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अगर हमें कम्युनिकेशन पहुंचाना है, अगर हमें कनेक्टिविटी पहुंचानी है, अगर हमें डिजिटल इंडिया का सपना साकार करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम तभी कर सकते हैं जब स्पेस के बेनिफिट सबको मिले. वो तब मिलेंगे जब हम इस नेशनल एफर्ट में, इस राष्ट्रीय एफर्ट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे हर तरह से. जब मैं बोलता हूं हर तरह से, तो हम स्टार्टअप से शुरू करते हैं. स्टार्टअप्स के पास बहुत अच्छे आइडिया हैं, बहुत अच्छे उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, मगर फंडिंग नहीं है.
फंडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए, ठीक है। तो वो एक लेवल है जो हमें समझना चाहिए। अगर हम जाते हैं मिडिल लेवल इंडस्ट्री पे, जैसे सुब्बाराव सर है, तो सुब्बाराव जी के पास एक ट्रैक्शन बन गया है, एक थोड़ा कैपिटल है इनके पास, लेकिन हम उससे भी अगर ऊपर जाएंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर, HAL के ऊपर, लार्सन एंड टूब्रो के ऊपर, जिनके पास कैपिटल है, वेयरविदॉल है, और वो अभी तक इसरो के साथ काफी अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ अकेले में ये देखें कि लार्सन एंड टूब्रो, HAL या BL काम कर लेंगे, तो वो सपना साकार नहीं हो सकता एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्पेस का। तो हमें सबको इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि कम्युनिकेशन और डिजिटल इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक होता है constellation of satellites are able to reach remote corners where normal satellite communication is not possible. वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हमको एक छोटे सैटेलाइट्स यानी कि नैनो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स के लिए माइक्रो सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। वो बेस्ट इज बीइंग डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। द ह्यूज सैटेलाइट्स, बिग सैटेलाइट्स, लेट्स से 5 टन सैटेलाइट्स, दे आर बेस्ट बीइंग डन बाय इसरो या बेस्ट बीइंग डन बाय द प्राइवेट सेक्टर इन लार्ज कैपेसिटी। तो अगर हम देखें, भारत नेट है, डिजिटल इंडिया है, पंचायतों को कनेक्ट करना है, हमें कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज पहुंचानी है, या हमें एक छोटे से छोटे तबके में टेलीमेडिसिन भी पहुंचानी है, ताकि हमारे देश में आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचा सके। ये सब तभी संभव है जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और इसरो मिल करके काम करें, क्योंकि ये देश हमारा है। आत्मनिर्भर हमें बनना है तो देश को बनना है, देश को बनना है तो हम सबको मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो नई पॉलिसी आई है, प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, और इसमें इसरो का इतना सहयोग रहा है, ये एक ट्रेल ब्लेजर, इट्स अ पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट जो इन स्पेस आया है। इन स्पेस एक ऐसी संस्था है जो जोड़ेगी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को इसरो के साथ जोड़ेगी, एक रेगुलेटर का भी काम करेगी। तो ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, ये रिफॉर्म्स जून से शुरू हुए, बस 4-5 महीने हुए, ऐसा नहीं है कि हम 1 साल से लगे हुए, लेकिन आप देखिए कितनी तेजी से आ रहे हैं रिफॉर्म्स। तो ये अगर इतनी तेजी से आ रहे हैं तो ये एक प्रधानमंत्री की और सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है, बिल्कुल, कि वो प्रतिबद्ध है, दे आर कमिटेड टू मेक इट हैपन, and without the support of ISRO nothing is possible. So it's because ISRO is the first player, is the leading player, and ISRO ने उस समय अपना सिक्का जमाया जब हमारे साथ कोई भी बड़ा देश काम करने को तैयार नहीं था, हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। वो स्वावलंबी तब बने। तो जैसे सुब्बाराव जी ने बोला, आत्मनिर्भरता तो इसरो के डीएनए के अंदर है, वो डीएनए हमें ट्रांसफर करना है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो इसरो का डीएनए है वो एक तरह से ट्रांसफर करना है प्राइवेट के अंदर, और निश्चित तौर पर जो प्राइवेट प्लेयर्स है और इसरो मिल करके इस स्पेस सेक्टर में साथ मिलकर कदम ताल करेंगे और देश के विकास में भागीदार बनेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी स्पेस सेक्टर में निजीकरण को लेकर के चर्चा हमारी जारी रहेगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज IT/AT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पर जाकर DTVSV में फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? थैंक्स। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर NDA में। Welcome back after the break. You're watching Atmanirbhar Bharat, and we are discussing about the entry of private players. Well, what our guests have made clear is that private players have always been there. What has changed with the new...
Right. What has changed are the reforms that have been introduced by the government led by Prime Minister Modi that makes it much easier for space exploration, for innovation in various fields. Talking with Dr. Subbarao and Mr. Ratan Srivastav about all these various issues that are related. Coming to you, Dr. Subbarao, it's been made clear that the private sector has always been a part. Private players have always been there in when we talk about space exploration. They've been a part. They've become a part of ISRO right now, as ISRO chairman said. ISRO has provided and will continue to provide an ecosystem of support and help. But the reforms that have been introduced, how will it change the way that companies like yours function? What are the challenges that you will be able to overcome easier now that these reforms are in place, and what are the new sectors that will be impacted? Yeah. See, as you know, the fundamental policy that has been announced recently by the finance minister is that they are going to take Indian industry as a co-traveler. This is important terminology. You must observe co-traveler, which means ISRO would function in terms of taking care of research and development part. All right. And now the other aspect of commercial aspect of space business has been left out to industry. This is the kind of a similar policy that has been in existence in America also earlier. For example, NASA was taking care of the research part of it. A lot of other people are taking the commercial part of it. Now with this, it becomes easy for the industry to promote. For example, a company like ours, soon after the policy has been announced, we formed a joint venture with an American company which has experience of putting mid and large satellites to put them into communication area. The objective is, India would like to, our facilities in India should be a manufacturing hub for satellites for a global scenario. You know, in any satellite manufacturing, 30 to 40% is the human resources interference into it. बिल्कुल. That's where, if the bandwidth to be reached to the common man, if the cost has to be less, naturally we have to save on the satellite making. And where the PSLV, which is the greatest boon for this country, is the PSLV launch vehicle. And equivalent to that, you don't find in that category of 1400 kgs to be launched to the space, that type of category, you don't have any other launch vehicle in the globally available today. So therefore, since this liberalization happened, we would like to take advantage of making the satellites in India, launching using the PSLV for a global usage. In the process, of course, India also will get benefited in terms of having the new satellites, new technologies, and a lot of other new ideas coming up. As Dr. Shivan has mentioned, a lot of startups comes with a new idea. That idea can be manufactured, put them into the manufacturing system, and even those satellites can be used for the LEOs, low Earth orbiting satellites. So therefore, the whole scenario, you should look at it. Elon Musk that you mentioned in the earlier program with Dr. Shivan, we can have many Elon Musk in this country. Now the policy enables that. Look at the other sectors. A lot of Indian initiatives happened. And similarly, the Indian initiatives, Indian entrepreneurship will be fully blooming with this new policy in place. जी बिल्कुल. डॉक्टर सुब्बाराव, अगर ये समझना चाहें कि जैसे ये एक धारणा रही है कि स्पेस सेक्टर में जो निजी प्लेयर्स रहे हैं अभी तक, उनका कोई बड़े निवेश में या दीर्घकालिक निवेश में अभी तक इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्या ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकेगी और उनको एक तरह से पार्टनर के तौर पर जब वो काम करेंगे, क्या बड़ा निवेश और लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे, क्या इस तरह से समझा जाए इसको? Yeah, as you mentioned, the private public partnership is going to evolve in this process also now. So for example, when we are making the satellites, it's not necessarily that every equipment that I should have with us. Large investments already been made of the taxpayers' money in the ISRO. Those facilities can be made use of by the private initiatives like us. So therefore, that's a private-public partnership. That's number one. This is as far as the commercial satellite concerned. When you're talking about the technology-related satellites or technology-related activities,
You talk about LONA, or it can be some other programs of that kind. Again, the ISRO and the private initiative can form together, work together, and the benefits of the science and technology R&D also can reach further. That's where public-private cooperation will be having immense value in future in the space sector. And the space sector has immense value in terms of contribution to the national economy. That's where, again, the private, both will have to come together on this. Right. Ji. Well, Ratan Srivastav, when we talk about making space exploration, making space as a subject a part of the public consciousness, we're talking about here about 130 crore Indians. Space exploration, space studies have always been for those with immense, intellectual capacity. As a space expert, would you say that there is a need to make it more of the masses from a much younger age? Definitely. I mean, this is something which is very pertinent. So if we need to inculcate a sense of space tech in the coming generation, we need to introduce space as space technology and awareness for space, just like we have the awareness for science and scientific temper at a young age. In this, the role of schools is extremely important. When I say role of schools is extremely important, I'm talking of schools at all levels, whether they are government schools or they are private sector schools. We need to inculcate a sense of space awareness, not only in terms of rockets, which is very exciting and most children would love it, but also give them an exposure in terms of the technology which is available to the country. This can be easily done by both the private sector and the public sector along with ISRO. ISRO, for example, is running programs for students in which they are running competitions where children compete, and then they are given a sort of exposure to ISRO. They are taken to ISRO facilities and given an exposure. But that is just a small beginning. We need to do it in a much more larger scale. We need to inculcate maybe space as a subject along with physics, chemistry, maths. We need to possibly also give children an exposure towards various facets of space. The space is not only rocket or satellites, as we've been talking about. Space is about remote sensing, ground stations, applications. Applications is a large part of space. How do we make use of the data which is available to us? That is only possible through applications. That is software. So it is imperative that this becomes a part of the curriculum, so that they get an exposure. At the higher level of education, definitely there is already an initiative. Mm-hmm. We have the IIST at Thiruvananthapuram, right, which is sort of a feeder for space engineers and space technologists. And this, fortunately for us, we have been able to even contribute to other countries. IIST graduates have gone and shown the name of India in several countries like Germany, France, US, Japan. This is something that we must understand, that at lower level, unless we inculcate and make space as a career option and make it exciting and interesting, we will not be able to nurture the next generation of space technologists in this country. And also on the commercial side, Subba Rao ji is on the technology side. I am from the industry side. So industry and technology has to meet together in order to make it more interesting and accessible to everybody. But there's one thing which Dr. Subba Rao said, and that's extremely important, is this that the role of ISRO has always been there and is very, very important. ISRO has contributed many people in all facets. Dr. Subba Rao is one such example. Maybe you do not know. He is ex-ISRO scientist who has ventured into the private sector, and he is now contributing. But similarly, on the academia side, ISRO has to possibly partner with more larger environment and send out its own ambassadors who could take this message forward. बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी है, यूँ कहें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बदौलत स्पेस सेक्टर में भी देश कुलाचे मार सकेगा, आगे बढ़ सकेगा, नए एक तरह से
जंप लगा सकेगा, ये सबको उम्मीद है। और जो सपना आप सब ने देखा है, प्रधानमंत्री ने देखा है, देश ने देखा है, वो आने वाले वर्षों में जरूर सच हो सकेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुब्बा राव आपका और रतन श्रीवास्तव जी आपका इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। Many thanks to both our guests for joining us on the show. That's all we have time for, and we're talking about how the space sector, space research, innovation is evolving as with all its potentialities. India has the potential to become the space hub of the world. That is the dream and that is the vision of the Prime Minister and of so many